Good morning, students. Myself, Major Komal Gatyal, Department of Zoology, GK Gowani Government College, Bhilmar. Today, we will discuss the part second of phylum Nematoda. In the part first of phylum Nematoda, I told you regarding the general characters of phylum Nematoda, their outline classification, and two most common examples of animal parasitic nematodes, one the Ascaris and the second one the Antrobius. Both were the parasites of intestinal region. Now today we will discuss about the hookworms in the first slide. As it is clear from the name, their anterior end has hooks, and these hooks, like the hooks of Taenia solium, which belong to Platyhelminthes, they are responsible for attaching the endoparasite to the body wall, here the intestinal wall of the host. There are two examples of hookworm. One, the Nicketerror americanus, the American hookworm, and Ancylstoma duodenale, the hookworm which is commonly present in the Indian subcontinent. The males of hookworms are characterized by presence of copulatory bursa. They feed on blood and lymph which are present in the intestinal wall, and as they feed on blood and lymph, it causes anemia and pneumonitis if they migrate to lungs in the case of the host. तो आज हम बात करेंगे हुक कृमि की। हुक कृमि के जो अग्र भाग होता है उसमें हुक के का समान एक संरचना होती है जो परपोषी है उसके शरीर से चिपकने में सहायता प्रदान करती है। हुकवर्म ज़्यादातर जो इसका होस्ट है, पोषी है, परपोषी है, उसकी आंत की भित्ति से चिपके हुए पाए जाते हैं और उसका रुधिर और लिम्फ को, लसिका को चूसते हैं, जिसके कारण जो होस्ट है उसके अंदर खून की कमी हो जाती है, रक्त की या रुधिर की कमी हो जाती है, और कई बार ये क्या करते हैं, निमोनिया जैसे भी लक्षण उत्पन्न कर देते हैं अगर ये फेफड़े में चले जाते हैं। This slide shows that how the life cycle of Nicketerror americanus is taking place. First, the eggs are present in the feces, and these eggs, when hatches in the external environment, there is formation of a larva, which is the rhabditiform larva in the soil, and from soil there is formation of the second larva, which is the infective stage, the filariform larva. And this filariform larva generally penetrates the skin, especially the soft skin present between the finger toes, and from there it goes into the blood circulatory system. From blood circulatory system, as the blood goes to the heart, it goes to the lungs via heart, then from lungs to upward migration trachea and pharynx, and from pharynx the swallowing takes place, and due to swallowing it goes to the intestinal region of the host. कहने का मतलब यह है कि मिट्टी के अंदर जो इसके अंडे होते हैं उसमें से लार्वा निकलता है, और जो इन्फेक्टिव संक्रमण फैलाने वाला लार्वा है वो जो होस्ट है उसके त्वचा को भेद कर शरीर के अंदर रक्त परिवहन तंत्र में आता है। रक्त परिवहन तंत्र में वो हृदय से होता हुआ फुफ्फुस, और फुफ्फुस से ट्रैकिया और ग्रसनी से होता हुआ इसके निगलने की प्रक्रिया से पाचन तंत्र में आहार नाल के आंत वाले भाग में पहुंच जाता है और आंत की भित्ति से फिर चिपक जाता है। This is the life cycle of Ancylstoma caninum, the hookworm of the dog worm. This is the migration of the
cutaneous larval migraines, the hookworm from dogs and cats. You can see the penetrating larvae causes characteristic tiny and irritating sores called dew sores or the ground itching. And hemorrhages and bronchial pneumonitis by migratory larvae in the lungs. The drugs which are used are thymol, carbon tetrachloride, and oil of chenopodium. The next is Trichenella spiralis, the trichina worm, which is generally present in pigs, bear, dogs, cats, rats, and even in human being. It occurs as a coiled encysted larvae in the voluntary muscles of limbs, chest, diaphragm, tongue, eye, and neck. The heavy infection is fatal and the disease caused is known as trichinosis, which is the encyst present in the muscles. This is the life cycle of Trichenella spiralis. You can see in the human being, the adults are present in a small intestine. The larvae deposit in the mucosa, the encysted larva in the striated muscles, while whenever the infected half-cooked meat or pork is taken by the human being, it enters the life cycle in the human being. This is the next example, the Wuchereria bancrofti, which is commonly known as the Filiaria worm, responsible for causing the elephantiasis. It lives in the lymphatic system of the human being. The intermediate host is a blood-sucking insect, which is a mosquito, generally the Culex mosquito. The juveniles are microfilariae and the heavy infection obstructs the lymph to cause swelling. This is a lymphedema and inflammation of the lymphatic vessels. The disease is known as lymphangitis or elephantiasis or filariasis. जो फाइलेरिया वॉर्म है ये फील पाँव या हाथी पाँव रोग पैदा करता है, चूँकि बहुत ज़्यादा संख्या में जब लार्वा माइक्रोफाइलेरिया लार्वा इसके इकट्ठे हो जाते हैं तो उससे जो लिम्फ लसिका वाहिनियां हैं उससे लसिका वापस रुधिर में जाना बंद हो जाता है और वहां पर क्या होता है, इस बाधा की वजह से उडीमा और स्वेलिंग होनी प्रारंभ हो जाती है. दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ elephantiasis. This is the life cycle taking place in the host, that is the human being, and the secondary host, the mosquito. You can see the third stage infective larvae are transmitted by the mosquito during its bite or sucking the human blood. And there is a characteristic biological cycle or the biological rhythm is present in the microfilariae. In the daytime they are generally present in the lymphatics, and at the night they come to the peripheral circulatory system. So whenever the mosquito sucks the human blood, it goes via the blood to the mosquito, and this first and second stage infective larva then goes under development to form the third instar larva. And when this infective mosquito bites the healthy human being, the transmission occurs. These are the two examples, Loa loa, which is the eye worm, and the Trichuris trichura, which is the whipworm. Now you can see the life cycle of Loa loa, the eye worm, how the infection is taking place. Again, here the secondary host is an insect where a female insect is biting. Here it is the chrysops, the deer fly or the horse fly, and the infection is taking place in the human being. Then the Dracunculus medinensis, it is a fiery serpent popularly known as guinea worm. The primary host is human being. Intermediate host is a copepod crustacean, the cyclops. Females are much greater in length. Their length varies from 1 to even 4 meters. The males are rare and their length are smaller
approximately 12 to 29 millimeter in length। जो ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस है, जिसको हम नारू या बाला कहते हैं, इस जो स्टेप वेल्स होते हैं जिनको हम बावड़ी बोलते हैं, वहाँ पर पहले के लोग पानी भरने के लिए उस बावड़ी के अंदर जो शरीर का निचला भाग होता है वो पानी के अंदर रहता है, और वो पानी को हटा के बिना छाने पानी को चरी या घड़े में भरते थे। तो उससे क्या होता है कि जो क्रस्टेशियन साइक्लॉप्स है, इसके अंदर जो नारू या बाला के अंडे होते हैं, वो साइक्लॉप्स भी, चूंकि सूक्ष्मदर्शी जंतु हैं, पानी के साथ जब भी हम इस तरह का पानी बिना छाने पीते हैं तो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है। और जो अंडे हैं, चूंकि अंडे के चारों तरफ बहुत ज़्यादा कठोर आवरण होता है, तो अंडा का पाचन नहीं होता, जबकि साइक्लॉप्स का हमारा शरीर पाचन कर देता है, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। जब ये इंटेस्टाइन के अंदर पहुंचते हैं, वहां से माइग्रेट करते हैं और कहाँ चले जाते हैं, फिर सबक्यूटेनियस टिश्यू के अंदर, और वहां पर मेल एंड फीमेल जो वर्म्स हैं उनमें मेटिंग होती है, कॉपुलेशन होता है, और उसके पश्चात जो मेल है उसकी डेथ हो जाती है। जो फीमेल वर्म्स है वो फिर माइग्रेट करता है स्किन की तरफ, ज़्यादातर वो त्वचा जो साधारणतया पानी के संपर्क में निरंतर आती रहती है, जैसे घुटने से नीचे वाले भाग टांगों का, या जो आपकी एंकल वाला रीजन है, टखने वाला भाग, पैर वाला भाग, यहाँ पर ये माइग्रेट करता है। और जब भी ये पैर पानी के अंदर जाता है तो फिर ये जुवेनाइल्स क्या होते हैं, रिलीज हो जाते हैं। क्योंकि जब ये त्वचा के वहाँ जाता है तो त्वचा में ये क्या करता है, फफोले उत्पन्न करता है, ब्लिस्टर्स जिसको बोलते हैं, और पानी के संपर्क में आते ही ये ब्लिस्टर या फफोले क्या होते हैं, फट जाते हैं। फटने से जो जुवेनाइल्स हैं वो सीधे पानी के अंदर चले जाते हैं, और पानी के अंदर जाने के बाद ये जुवेनाइल्स जो है फिर कोपेपोड या साइक्लोप्स के शरीर में प्रवेश करते हैं। वहां पर उनका मैच्योरेशन या परिपक्वन होता है। और जो साइक्लॉप्स है, साइक्लॉप्स जब हम बिना छना हुआ पानी पीते हैं तो हमारे शरीर में साइक्लॉप्स के साथ पुनः संक्रमण प्रारंभ हो जाता है। It is the largest nematode with a clear-cut sexual dimorphism, मतलब इसमें लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। The posterior end of female is curved with 10 pairs of genital papillae, 4 preanal and 6 postanal. The posterior end of the female is straight, pointed. The Dracunculus is responsible for causing symptoms like asthma, nausea, urticaria, diarrhea, and dyspepsia. Treatment is a surgical removal of female, and the medicine generally used are thiobendazole, metronidazole, phenothiazine in olive oil. जो ड्रैकनकुलस जो नारू है, इसका जब संक्रमण होता है तो इससे अस्थमा जैसे लक्षण दिखाई देते हैं, बार बार मितली या जी में चलाता है, शरीर पे निचले वाले भाग में जो पानी के संपर्क में आता है वहां पर क्या होते हैं, फफोले या दाने उभर आते हैं। जब ये आंत के अंदर होता है तो कई बार ये क्या करता है, जो रोगी है उसको दस्त भी लग सकते हैं, और मंदाग्नि मतलब उसको भूख भी कम लगना प्रारंभ हो जाती है। So this is how the life cycle of guinea worm is taking place. It starts whenever there is a characteristic feature that whenever the blister occurs on the feet, it creates some irritation, as a result of which the sufferer, the patient, जो रोगी है वो चाहता है कि उसको इस ब्लिस्टर या इससे थोड़ा रिलीफ मिले, आराम मिले, तो वो क्या करता है, उसको पानी के अंदर डाल के साफ करने की कोशिश करता है। और इस कोशिश के अंदर वो क्या करता है, जो जुवेनाइल्स हैं वो ब्लिस्टर फट जाते हैं, और जो इसके जुवेनाइल्स हैं वो पानी के अंदर, स्पेशली जहाँ पर स्टेप वेल्स हैं, बावड़ियाँ हैं, वहाँ पर इस तरह का इन्फेक्शन होने की संभावना अधिक होती है। So with this, I complete the second part of my lecture on phylum Nematoda. इसके साथ ही नेमेटोडा पे मेरा जो द्वितीय व्याख्यान है वो समाप्त होता है। धन्यवाद।